रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सब व्यूअर्स का खैर मकदम। ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क की लाइव नशरियात में नए दिन नए मुकाबले के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर। जानवरा क्रिकेट लीग के तहत दिन का दूसरा मुकाबला और कुछ बड़े नाम इस मुकाबले में शामिल होंगे। मुकाबला है MCC बांडीपोरा और गुंडब्राट 11 के माबैन। गुंडब्राट टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। लतीफ दिया गालिबन जो है स्ट्राइक पर होंगे। देखना होगा, जी हाँ, लतीफ दिया स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक एंड पर कौन से बल्लेबाज है ये भी आपको जानकारी देंगे। जबकि बॉलिंग मार्क पर गेंदबाज बिल्कुल तैयार। आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, JK स्पोर्ट्स डिस्कवरी पर। इसके अलावा ज़रा देर बाद आप क्रिक हीरोज ऐप पर भी हमें देख सकते हैं। तो मैच की पहली गेंद के साथ गेंदबाज बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार और सामना करेंगे उनकी गेंद का लतीफ दिया। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। ये बड़ा मुकाबला जानवरा क्रिकेट लीग के तहत और जानवरा क्रिकेट लीग में जो है आज के दिन का दूसरा मुकाबला। एमओ इम्तियाज बॉलिंग मार्क पर मैच की पहली गेंद के साथ लतीफ दिया के लिए ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, विकेट पे पहुंचे, गेंद की बैक फुट पर गेंद को खेल दिया, बड़ा खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद गोली की मानद बाउंड्री लाइन पार 4 रन के लिए। आपको रीप्ले में जरूर दिखाना चाहेंगे किस तरह का स्ट्रोक खेला और 4 रन हासिल किए लतीफ दिया ने। ये आप देख सकते हैं, बड़ा खूबसूरत बैक फुट पर कट किया और गेंद 2 फील्डरों के दरमियान से होती हुई सीधे 4 रन के लिए। तो खाता खुलता हुआ गुंडब्राट का 4 बिना किसी नुकसान के। चौके की मदद से यह खाता खुलता हुआ। एमओ इम्तियाज ओवर की अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑप्शन से बाहर, एक मतबा फिर बड़ा खूबसूरत बिल्कुल उसी अंदाज से गेंद को खेला और एक मतबा फिर गेंद बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए। एक और चौका आता हुआ लतीफ दिया के बल्ले से और स्कोर बढ़ता हुआ 8 बिना किसी नुकसान के। लगातार 2 चौके लतीफ दिया के बल्ले से आते हुए और बड़ा खूबसूरत जो है अंदाज से इस गेंद को खेला 4 रन के लिए। और अब एमओ इम्तियाज को कुछ सलाह मशवरा देते हुए अपने साथी खिलाड़ी। एमओ इम्तियाज बॉलिंग मार्क पर बिल्कुल तैयार, बड़ा लंबा बॉलिंग रनअप एमओ इम्तियाज का। हमारे कमेंट्री बॉक्स की एंड से एक मतबा फिर ओवर में तीसरी गेंद के साथ लतीफ दिया सामना करेंगे उनकी गेंद का। गेंद की इस मतबा अच्छी गेंद, अच्छी लाइन में गेंद को फेंका और अंदर की जाने आती हुई गेंद को मोहतात अंदाज से खेला लतीफ दिया ने। रन बनाने का कोई मौका नहीं। मजमूई स्कोर 8 बिना किसी नुकसान के गुंडब्राट 11 का। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। हमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से भी जरूर आगाह कीजिएगा। अब अगली गेंद के साथ इम्तियाज ओवर की चौथी गेंद, मजमूई स्कोर 8 बिना किसी नुकसान के गुंडब्राट का। बाहर ऑप्शन से बाहर गेंद, बल्ले का किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की जानिब जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 9। अब शाहिद मीर जो है वो सामना करेंगे इम्तियाज का और शाहिद मीर जो है वो अब पहली मर्तबा इस मुकाबले में गेंद का सामना करेंगे। गुलाम रसूल गनाई हमारे साथ पांजला से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे रेगुलर व्यूअर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और MCC बांडीपोरा और गुंडब्राट 11 के दरमियान ये टूर्नामेंट का 5वां मुकाबला जानवरा क्रिकेट लीग का। एमओ इम्तियाज ओवर में 5वीं गेंद के साथ ओवर द विकेट। गेंद की अच्छी गेंद, इस मतलब थोड़ी अंदर की जाने आती हुई, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। 9 मजमूई स्कोर है और एमओ इम्तियाज एक मरतबा फिर जो है ओवर में अब आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का शाहिद मीर बिल्कुल तैयार गेंद का सामना करने के लिए। एमओ इम्तियाज हमसे दूर भागते हुए अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे, लेग स्टंप से बाहर और बाहर की जानिब जाते हुए और वाइड बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। स्कोर बढ़ता हुआ 10। उजैर मीर हमारे साथ जुड़े हैं आदिल मीर के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पारी का पहला ओवर जारी है और मजमूई स्कोर है 10
20-20 ओवर्स पर ये मैच मुश्तमिल। और दिन का दूसरा मुकाबला गुलाम रसूल गनाई, उजैर मीर, आदिल मीर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जानवरा क्रिकेट लीग का एक अहम मुकाबला। अगली गेंद हवा में खेला गया, सो काफी ऊंचा शॉट, फील्डर गेंद के नीचे जाने की कोशिश में, क्या कैच लेने में कामयाब होंगे? बड़ा खूबसूरत वेल जज कैच, और काफी देर तक निगाहें जो है गेंद पर जमाए रखी, खुद को बैलेंस में रखा और एक अच्छा कैच हासिल किया। तो इस तरह से पहली विकेट गिरते हुए शाहिद मीर के रूप में गुंडब्राट 11 की, और शाहिद मीर बिना खाता खोले एमओ इम्तियाज की आखिरी गेंद का शिकार बने। लतीफ दिया के हवाले से जो है डार्क गवर लिख रहे हैं, मीर मंजूर हमारे साथ जुड़े हैं पुलवामा से, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मजमूई स्कोर है 10, 1 विकेट के नुकसान पर गुंडब्राट 11 का आउट होने वाले बल्लेबाज शाहिद मीर, जो आउट होकर पावर लाइन वापस जा चुके हैं बिना खाता खोले। We warmly welcome each and everyone to the official live broadcast of Global News Network. As Sophie Perez already informed you that this is the second game of the day, and MCC Bandipur are taking on Gundrat 11. And an irresponsible shot from the batter. He was trying to get off the mark with a big shot as the ball pops up in the air. And that was a good running catch by Uruj Pervez at mid-off. He was running backwards, tracking backwards, and he judged it to perfection and grabs that one and sends Shahid Mir back into the pavilion, and he departs on a silver duck, a second ball duck for Shahid Mir. It's 10 for the loss of 1. It's MCC Bandipora taking on Gundrat 11. After winning the toss, they decided to bat first, Imo Imtiaz. And we talk about the playing 11 of both the teams. Imo Imtiaz is leading the charge of Gundrat 11, and Ashik Amla is there, Ejaz Ahmed, Altaf Hussain, John Mir, Latif Dia, Nasir, Rashid Khalik, Salman, Shahid Mir and Zuhur Peter. So this is the playing 11 of Gundrat 11. In the meantime, we're live again, the second over of the match, and first ball outside off stump. Latif chops it on the offside straight to the point fielder, and the man is inside the ring. There is no addition to the total. Seeing those first two shots from Latif there, as he started with couple of boundaries, he was finding that gap on the offside region. Now they have that fielder at deep point area trying to save the boundary, and in the meantime the new bowler who is been introduced, Shah Ilyas, short and wide outside off stump, and it should be a wide, signaled by the umpire, and one more additional run added to the score, and takes them to 11 for the loss of 1. Shahid Mir, the first one to depart today, was first 6 of the day, and that was a executed shot, a staggering shot from the bat of Latif. He moves across the stumps, and the free hit yielding them those 6 runs. He's gone for the jackpot here on that free hit delivery, and absolutely terrific strike that is from the bat of Latif, and he's on song today. He's timing the ball nicely, he's middling it well, and he's on for a big innings here if he gets well set. Sorry for the inconvenience caused. It was a slight network issue, and it's working fine now. You can enjoy the live broadcast. We talk about Latif Dia. I was just having a word about this man. He's tough. He's a dangerous top order batter when he's on song. And today he's showing his class. He's proving his mettle with the bat. Couple of beautiful shots of his bat and a towering 6 as well. We are in over number 3, and there are 26 on board for the loss of 1. Imo Imtiaz has got a solitary wicket of Shahid Mir in his very first over. He was caught at mid-off by Uruj Pervez, and Latif Dia is batting on 22 of 14. He's got more of a strike now. He's just trying to get well set and on non-strikers, and it's Salman who is just faced, who hasn't faced a ball yet. Next ball jumps on the toes and works it on the offside, straight to the point fielder, and there is no addition to the total. You got Asif Hari, and he is the regular viewer of Global News Network, and Rahi Asif, walaikum salam. And then we got couple of viewers, and
Mr. Nisar Ahmed Khande Sahab also watching and enjoying the game. Thank you very much for your love and support. Welcoming you with open hearts and open arms. In the meantime, Moeen Imtiaz goes for the 4th time to Latif Dia. He's bowled him. Capped a bit low, and Latif was just trying to defend it. Gets beaten, and the ball sneaks through and disturbs the timber, disturbs the woodwork. Moeen Imtiaz has his 2nd of the day. And look at that one in replays. He was just trying to defend that one, and Moeen Imtiaz was able to breach the defense of Latif Dia as the ball goes through the gate and hits the timber, disturbs the woodwork. And what a start this is for Moeen Imtiaz. He's done the job for the team. He's been invited to bowl first, and he is doing a fine bit of job with the ball. He's got 2 wickets in his 1.4 overs and has given away just 10 runs, and he has sent down both openers back into the pavilion packing, and problems, I could say serious problems for the batting side, losing their 2 wickets, 2 openers inside the power play, and doesn't have enough runs on board. 26 for the loss of 2. Latif walks back to the pavilion. As I said, was looking good, but all of a sudden he loses his cool. He was trying to defend, and Moeen Imtiaz, a clever bowler there, he was able to break through the defense of the batter, and he was able to rattle the stumps. The new batter is in, Nasir at number 4, and he's got a job to do for the team, and it's a tailor-made situation for Nasir. He can bat in these kinds of situations where you know your team needs you to deliver a box office performance. Your team is under pressure, already 2 down, and both the openers are back into the pavilion. And it's Moeen Imtiaz who is doing the damage at the top of the order. He is just demolishing the top order just in his 2nd over. He's got both the openers back into the pavilion. And that is what MCC Bandipora needed in this game. You've been invited to bowl first, and you need wickets up front. First ball to Nasir, onto the pads, and Nasir was trying to work it away, call for a single, and they have done it. Wicketkeeper was swooping onto the ball very quickly, and he was having a shot at the non-striker's hand, but he wasn't able to find the target. He wasn't able to hit the bullseye. Well backed up by Aruj at mid-off, and the batters are happy with a single. It's 27 for the loss of 2. It'll be the final ball of the 3rd over, and 27 for 2 it is. And Salman, for the first time, he gets ready to face Moeen Imtiaz from the combox, and he ducks that one in short. This has been pulled away on the onside. Times that one nicely, but the ball stops on the own near the boundary ropes and down to that region. It's a bit slowish outfield. And in the meantime, the batters cross for a couple of brace, takes them to 29 for the loss of 2. First man to depart was Shahid Mir, and he departed cheaply. He wasn't able to bother the scores today. Departed on a 2nd ball duck, but Latif was looking good. He was looking in an enormous touch, but his defense was breached. He was clean bowled by Moeen Imtiaz on 22, and he's the man who's got them those 2 wickets at the top. It has provided them with a blistering start with the ball. And 29 for 2 after 3 overs. Gone for the bowling change, and Shah Ilyas has been replaced by Aruj Parvez, as Ilyas was expensive in his first over. A couple of no bowls, and that is why he has been replaced by another talented fast bowler of Bandipora. It will be Aruj Parvez, and for the first time in his spell, he leaves the station with the first ball, and Nasir is well under the ball. He's right up to the mark, and he's covering the line, just pushes it away, keeps it down to short cover. There is fielder inside the ring, and no chance of a single. Wicketkeeper, he's got a slip in place. It's still a new ball, and you could see that is why you got that slip. You got the 3rd man out. You could get those edges when it's a brand new ball swinging away from the batter, and this one is wide outside off stump and left by Nasir. He was charging down the track, but he just witnesses the ball is outside off stump, outside his reach, out of his reach, and goes to the wicketkeeper. Shaibat, walaikum salam. Thank you very much, brother, for joining the live stream, and you're warmly welcomed. A big shout out to you as well. Aruj goes again to Nasir,
And he works it down to mid-on, charges for a single. And sent back by the non-striker Salman. It was a good call as mid-on fielder was charging into the ball. And he was quickly going towards the ball. He was electric at mid-on and denies the single to the batter. And he's not letting them to rotate the strike. That is where you create the pressure on the batters, when you don't let them score runs, when runs dry up for the batters. And they will look for those big shots, those release shots. And once again, he was leaving the crease, coming down the wicket. But at the last moment, he just pushes it away on the offside, straight to the fielder, and no addition to the total. Aruj Parvez starts with 4 dots in his first over. Told you again that whenever in a T20 game, the batters do think we don't have enough time there to consume those dots, to eat those dots, and there are at least 4-5 dots on the trot, and it's obvious the batters will try to go for the glory shot, will try to go for the big shots. This is short and wide, and Nasir thrashes that one away. Pass backward point in the gap and down to the boundary for 4. Wide outside off stump, and this has been nailed by the batter Nasir. Once you provide that width outside off stump, even though you have number of fielders on the offside, but this has been absolutely thrashed in the gap down to the boundary for 4. Nasir gets off the mark with a terrific boundary and takes them to 33 for 2. For the first time, Aruj was sending that one outside off stump, outside that reach of the batter. Once again, couple of steps down the wicket, but a lack of timing onto that. Gets it off the inside half of the bat to mid-off. There is man, and no chance of a single. 4 overs gone, 33 for the loss of 2. Shaib Butt watching from Saudi Arabia. Thank you very much, brother. And we got Jan Salim as well, and he's watching us from Gurez. May I remind you once again, you're watching it on Global News Network on Facebook and JK Sports Discovery on YouTube. We got an important, the double-header game of the day from this mesmerizing and wonderful sports field of Janwara. We got Gunbrat 11 taking on MCC Bandipur, and this afternoon it was Gunbrat 11's captain Imui Imtiaz who decided to bat first, and the decision until now seems to be it has backfired. Shot pulled away in style. That is some shot from the bat of Salman, and he smokes that one away down to the mid-wicket boundary for 4. Shot delivery, and he absolutely smokes down that one into the fence for 4. 37 for the loss of 2. Wonderful shot that was. And Imui Imtiaz, he just relies on the pace. He's got a good pace, and he absolutely pummels the ball down to the mid-wicket boundary. Malik Mehraj and Jiam Changa as well. We got Imtiaz Butt welcoming you to the live stream, brother. Thank you very much for joining, Imtiaz. The 5th over of the game in progress. And Imui Imtiaz has been the successful bowler so far. He has been the man who's given them those 2 wickets at the top. He's given away 16 in his 3rd. And he goes once again from the comb box and over the stumps to Nasir. Salman it is, and once again pulls that one away. He is a terrific puller off the ball. And this one has gone all the way for 6. A massive strike. Cannot bowl shot to this man. 2 short deliveries, and it deserved the treatment. And this one has sailed into the stands. That kept sailing, that sounded good off the bat, and it definitely is good as the ball goes out of the sports field of Janwara. A staggering 6 that was, a wonderful strike that was. And Imui Imtiaz, as I told you, he heavily relies on the short stuff, and this time Salman says thank you very much, and he dismisses that one out of the side. Bang, he goes half a dozen. 43 for 2 it is. Mike's got Imtiaz Butt and Muhammad Asif watching from Rafiabad Shutlu. 10 of first 2 bowlers. And Jiam Changa will definitely get you the replays as well whenever it's available. And Imui Imtiaz proving to be costly in this, has conceded until now 10 runs. Pressure will be on the bowler, and we'll have to wait and watch.
Down the ground, but I think it should be safe, and it is safe. It has landed. We're witnessing in this over. Up to the batter, Loftus him down the ground, down to long on. हेलो। तो कुछ टेक्निकल इशू आया था, उस वजह से हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी। अब जो है दुरुस्त होती हुई, और इस दौरान आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहेंगे कि 60 मजमूई स्कोर है। छठे ओवर का खेल जारी। नसीर ने 4 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया, जबकि सलमान ने 28 रन बनाए सिर्फ 7 गेंदों का सामना करते हुए। अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि किस तरह की बल्लेबाजी की सलमान ने इस मुकाबले में। तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर मजमूई स्कोर है 60 मजमूई स्कोर है। 3 विकेटों के नुकसान पर अरूज परवेज का ओवर जो है उसमें विकेट गई। नसीर अहमद जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। तो अब नए बल्लेबाज के आने का इंतजार है। डगआउट से नमूदार हुए हैं, अभी नाम अपडेट नहीं हुआ। जैसे ही अपडेट होगा आप तक जरूर नाम भी पहुंच जाएगा। Another one bites the dust as Nasir nicks it behind to the wicket keeper, and it is the 3rd wicket which has fallen. The 3rd wicket has gone back to the pavilion. He departs on 4. It will be Aruj Parvez, and in his second over he's given away just 4 runs. Zahoor Peter is the man in, as he is at number 5 for the team. Aruj Parvez, he is in his second over. It's the 6th over of the innings in progress, and Salman is looking deadly dangerous with the bat. He is on 28 of just 7 bowlers. Zahoor Peter is yet to get off the mark. He is the new man now. Earlier it was a bit of technical issue, a network issue, as looks like a weak network zone. And we'll try to sort it out. We'll try to bring you the best of the live coverage as Aruj Parvez for the first time outside edge and gone again, straight to the wicket keeper, forces him to go for the drive, gets plays away from the body and pays the price for it. And nothing short. AC was trying to drive it on the up, and it was a stunner behind the stumps, a one-handed catch behind the wickets, and one more goes down. It's 60 for the loss of 4. तो कुल मिलाकर जो है 60 मजमूई स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर पीटर आए और पहली ही गेंद का शिकार हुए, और अरूज परवेज के खाते में जाने वाली दूसरी विकेट। हैट्रिक पर होंगे अरूज परवेज क्या हैट्रिक हासिल करने में कामयाब होंगे? ये सभी कुछ खेल के साथ साथ, और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, अब हमें जो है
ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप तक हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। अगर पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो फॉलो का बटन भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा और साथ में हमें ज़रूर जो है जानकारी दीजिएगा कि आप तक हमारी लाइव नशरियात कैसी आ रही है। तो पीटर जो है वो आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन से आएंगे जो अरूज परवेज की गेंद का सामना करेंगे और 60 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर। अरूज परवेज अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, 4 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की अरूज परवेज ने। अरूज परवेज बिल्कुल तैयार बॉलिंग मार्क पर। और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप तक हमारी ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। कुछ टेक्निकल इशू आया था, उस वजह से हमारी लाइव नशरियात आप तक नहीं पहुंच रही थी, उसके लिए माजरत खा, लेकिन अब जो है दुरुस्त होती हुई हमें ऑडियो वीडियो क्वालिटी के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हम चंगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार जुड़ने के लिए। इनाम बट भी हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद इकबाल के साथ। आबिदार बहुत बहुत शुक्रिया, क्वालिटी के हवाले से लिख रहे हैं गुड क्वालिटी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब, फेसबुक और क्रिक हीरोज ऐप पर बैक वक्त देख सकते हैं। फेसबुक पर ग्लोबल न्यूज नेटवर्क, यूट्यूब पर जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी और इसके अलावा क्रिक हीरोज ऐप। अरूज परवेज हैट्रिक वाली गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन के लिए गेंद की अच्छी गेंद पटकी हुई, इस गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड की जानिब और गेंद जो है विकेट कीपर सफाई के साथ रोक नहीं पाए। इस दौरान शॉट फाइन लेग की जानिब गए और गेंद को फील्ड किया गया। मजमूई स्कोर 60, 4 विकेटों के नुकसान पर और आतशी पारी खेली अभी तक मुख्तसर सी पारी सलमान के बल्ले से जो कि नॉन स्ट्राइक एंड पर है। 7 गेंदों का सामना किया और 28 रन बनाए सलमान ने। एमसीसी बांडीपोरा की जानिब से अरूज परवेज बॉलिंग मार्क से एक मरतबा फिर सामना करेंगे उनकी गेंद का अल्ताफ हुसैन। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की विकेटों में आती हुई गेंद को खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद, 30 गज दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। इमाद वानी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुल मिलाकर जो है यहाँ 7 ओवर्स का खेल, बल्कि 6 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। 60 मजमूई स्कोर, 10 की औसत से रन आ रहे हैं गुंड ब्राट 11 के लिए, लेकिन 4 विकेटें जो है वो गिर चुकी है। लतीफ दिया आउट होने वाले पहले बल्लेबाज, उसके बाद उनके साथ शाहिद मीर आउट हुए, उसके बाद नसीर अहमद और उनके बाद पीटर आउट होकर पवेलियन वापस जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर 60 मजमूई स्कोर 4 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल जो है शुरू होगा और रिप्ले में हम आपको जब तक अगली गेंद का जो है यहाँ अगली गेंद फेंकी जाएगी आपको रिप्ले के जरिए हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से पहली विकेट गिरी लतीफ दिया की। यह आप रिप्ले में देख सकते हैं किस तरह से लतीफ दिया की विकेट गिरी थी जब लतीफ दिया जो है बोल्ड हुए थे और ये पहली विकेट गिरी थी गुंड ब्राट 11 की। मजमूई स्कोर है 60, 4 विकेटों के नुकसान पर। आज़म राथर को लाया गया है बॉलिंग मार्क पर। आज़म राथर बॉलिंग मार्क पर, एक बड़ा नाम आज़म राथर का जो कि बॉलिंग मार्क पर है और सामना करेंगे उनकी गेंद का सलमान। अब जो है देखना होगा क्या गेंद बल्ले पर हावी रहेगी या बल्ला गेंद पर हावी रहेगा। आज़म राथर सलमान के लिए ओवर द विकेट, बल्कि राउंड द विकेट, और गेंद को खेल दिया। वहां फील्डर जो है उन्होंने दाएं लगाकर कैच लेने की कोशिश की थी, हालांकि गेंद जो है उनके हाथों में जाके हाथ से निकल गई और यहां मौका जीवन दान कहा जाएगा मिलता हुआ सलमान को। बैकफुट पर कट किया था और हम इमाद वानी जो है प्रेडिक्शन के हवाले से लिख रहे हैं, ये आप जो है बेहतर बता सकते हैं कि क्या लग रहा है आपको, क्या स्कोर जो है ग्राउंड ब्राट 11 की जानिब से एमसीसी बांडीपोरा के लिए होगा। आप बेहतर बता सकते हैं और जरूर जो है प्रेडिक्ट कीजिएगा कि क्या टारगेट यहां पे सेट होता है गुंड ब्राट 11 की जानिब से। आज़म राथर अगली गेंद के साथ ओवर द विकेट, फ्लाइटेड, गेंद का इंतजार किया, गेंद को जारहाना अंदाज से ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद विकेट कीपर के जरिए भी रुकी नहीं और स्लिप से फील्डर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। इमाद वानी बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज़म राथर अगली गेंद के साथ इस मरतबा बैक फुट पर गेंद को निकाल दिया, ऑन साइड की जानिब लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ इत्मीनान के साथ रन मुकम्मल किया। 1 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ 61, 4 विकेटों के नुकसान पर 7वें ओवर का खेल जारी। आज़म राथर अगली गेंद के साथ बाएं हाथ के गेंदबाज
गेंद की, इस मतलब बैट और पैड साथ मिलाते हुए अल्ताफ हुसैन ने गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब। ओवर जो है आजम राथर का अभी अच्छा जा रहा है एमसीसी बांडीपोरा के लिए, सिर्फ 1 रन आया 5 गेंदों पर आजम राथर के इस ओवर से। आजम राथर ओवर में आखिरी गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का अल्ताफ हुसैन, इस मतलब डॉट गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। कुल मिलाकर जो है 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 61 स्कोर, 4 विकेटों के नुकसान पर आजम राथर के इस पहले ओवर से सिर्फ 1 रन आया। अच्छा ओवर साबित होता हुआ एमसीसी बांडीपोरा के लिए। इमाद वानी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ये मुकाबला इस वक्त जारी है जानवारा के स्पोर्ट्स फील्ड पर, बड़ा खूबसूरत मैदान, और निसार अहमद भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और निसार अहमद जो है जानकारी दे रहे हैं कि गुंड ब्राट 11 के पास जो है स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप है। देखना होगा पहले टारगेट क्या सेट होता है, अगर एक अच्छा टोटल खड़ा होगा तो फिर जो है गेंदबाज उसका दिफा करने में कामयाब होंगे, ये तब जो है सामने आ जाएगा। लेकिन अभी कहा जाएगा कि 4 खिलाड़ी पवेलियन वापस जा चुके हैं, 61 स्कोर। अगली गेंद आजम के लिए, और गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड विकेट बाउंड्री पर, 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 62। मुदस्सिर है बॉलिंग मार्क पर, मुदस्सिर डार बॉलिंग मार्क पर, एक बड़ा नाम बांडीपोरा का, और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मुदस्सिर डार, जो कि बॉलिंग मार्क पर है। एमसीसी बांडीपोरा की जानिब से पारी का 8वां ओवर फेंक रहे हैं। अगली गेंद मुदस्सिर की, गेंद की अल्ताफ हुसैन के लिए, पैड से टकराई गेंद, विकेट कीपर गए, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। अल्ताफ हुसैन ने 6 गेंदों का सामना किया और अभी तक अपना खाता नहीं खोला अल्ताफ हुसैन ने, जबकि सलमान ने 30 रन बनाए 12 गेंदों का सामना करते हुए। निसार अहमद भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। अगली गेंद को खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद, रन बनाने का एक मरतबा फिर कोई मौका नहीं। लगातार डॉट गेंदें खेल रहे हैं बल्लेबाज, क्योंकि 4 खिलाड़ी पहले ही पवेलियन वापस जा चुके हैं और सिर्फ 8वें ओवर का खेल जारी है। अगली गेंद ऑप्शन से बाहर, बैक फुट पर खेलने की कोशिश नाकाम, और गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। मजमूई स्कोर है 62, 4 विकेटों के नुकसान पर। मुदस्सिर डार अपने ओवर में आखिरी गेंद के साथ, अभी तक सिर्फ 1 रन आया इस ओवर से। इससे पहले आजम राथर का ओवर जो गया उसमें भी सिर्फ 1 रन आया, तो कुल मिलाकर 8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमूई स्कोर 62, 4 विकेटों के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में गुंड ब्राट 11 का स्कोर, और जानवारा क्रिकेट लीग के तहत ये एक अहम मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला। It surely is a very important game for both the sides. You talk about the batting side, no doubt you lost 4 wickets. But you cannot go into the shell, you cannot keep defending each and every ball. You can see Altaf Hussain, he has faced 9 deliveries and he's yet to get off the mark. You can find those gaps, you have plenty of spaces on both sides, especially you can see on the leg side. There is nobody inside the ring and you can easily rotate the strike. You can get those singles. And don't let that pressure get better of you. You just need to attack whenever it's possible for you. And next ball off the back foot he goes, and Salman is doing a nice little job here. He is focused, he is composed, and he finds the gap on the offside, steals a single. And Altaf needs to learn these things here from Salman as well. Yeah, I do agree with that they lost 4 wickets, but it's important to keep rotating the strike, and you just keep that scoreboard ticking along. And once again Altaf, he has got that pressure on him, he's got enormous pressure. 10 balls he has faced and he is yet to get off the mark, and he is searching for that single run, he is searching for that 1 run, so that there will be the pressure which has been created, it will ease down a bit. And next ball, solid in defense, push that one away on the offside. At this time he is not in a mood to get that single and to get off the mark. He is just going into the shell and he's blocking each and every one. Azim Rathar goes again. He was trying to sweep and was trying to go for the big shot, and that's what happens. That is what I was telling you earlier, that as a batter, when you don't find those singles, when you don't find those gaps, and that thing gets into your mind that you'll have to go for the big shot, and now he is trying to break free. And rather he just tried to give strike to Salman, rather just rotate the strike and get your feet in first.
And that is where Azim Rathar can get into your mind. That's where you have a chance to get one more wicket here. That's where the batter can lose his cool. Again, a good over by Azim Rathar, just one from it. And 9 overs, 63 for 4. And can you believe it? After 6 overs, the score was 60. So last 3 overs, just 3 runs have been scored. And you can see out of those 18 deliveries, Altaf has faced 15. यहाँ 11 ओवर्स में मजीद कितने रन्स जोड़ने में कामयाब होंगे गुंडब्राट टीम के बल्लेबाज, और क्या टारगेट सेट होता है इस मुकाबले में। बल्कि 10 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। हम माजरत चाहेंगे, स्कोर कार्ड जो है अपडेट नहीं हो रहा था, अब अपडेट होता हुआ 66 मजमूई स्कोर है। तो 4 ओवर्स में सिर्फ 6 रन आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी हुई है। 4 ओवर्स में सिर्फ 6 रन आए हैं। ये इमाद वानी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इमाद वानी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ टेक्निकल इशू आया था नेटवर्क को लेकर, वो अब जो है दुरुस्त होता हुआ। पानी का वक्फा इस वक्त जारी है और यही सलाह मशवरा आया होगा बल्लेबाजों के लिए कि आप विकेट पर ठहरे रहे, लेकिन रन्स भी साथ में जो है स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाए, रन्स भी लेते जाए, क्योंकि सिर्फ 4 ओवर्स में 6 ओवर्स के बाद जो 4 ओवर हुए उनमें सिर्फ 6 रन आए। हालांकि विकेट नहीं गिरी, लेकिन सिर्फ 6 रन आए 4 ओवर्स में। 6ठे ओवर में चौथी विकेट गिरी थी, लेकिन उसके बाद 4 ओवर्स में सिर्फ जो है 6 रन आए। पानी का वक्फा जारी है और यहाँ जो है देखना होगा अब 10 ओवर्स के बाद किस तरह की बल्लेबाजी होगी, क्योंकि डगआउट से मैसेज आया दोनों बल्लेबाजों के लिए और गालिबन यही मैसेज होगा कि आप विकेट भी बचाइए लेकिन स्कोर बोर्ड को भी आगे बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिरदौस साहब के लिए जो है सराहना की है, बहुत बहुत शुक्रिया उनकी जानिब से आपके लिए। और इमाद वसवानी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो इमाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो अब देखना होगा 11वें ओवर के बाद जो है किस तरह की बल्लेबाजी होगी। मुदस्सिर डार ने 2 ओवर किए और सिर्फ 4 रन दिए मुदस्सिर डार ने। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निसार अहमद भट्ट बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं लाइव नशरियात में, लाइव नशरियात को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यह मुकाबला इस वक्त जारी है जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर। यह मुकाबला जारी है जानवारा क्रिकेट लीग के तहत एक अहम मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला, और कल भी गालिबन यहां पे 2 मुकाबले होंगे। आपको जो है इसी लाइव नशरियात के दौरान जानकारी जरूर देंगे। मुर्तज़ा बाबा भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा बाबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। कहां से जुड़े हैं जरूर जो है इस हवाले से जानकारी दीजिएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और लाइव नशरियात को ज़रूर जो है शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। आपको जानकारी देना चाहूँगा कि यह मुकाबला इस वक्त जारी है जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर। निसार अहमद जी बिल्कुल, और कोशिश रहेगी कि हम इस टूर्नामेंट के ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले जो है आप तक पहुँचाए। निसार अहमद भट्ट जो है उम्मीद है आप तक जानकारी पहुंच चुकी होगी। अब जो है 11वें ओवर का आगाज होता हुआ आज़िम राथर है बॉलिंग मार्क पर, उनका एंड तब्दील किया गया है और इस मरतबा आज़िम राथर की गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ से फील्डर गए। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर इत्मीनान के साथ रन मुकम्मल किया। 1 रन का मजीद इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 67 4 विकेटों के नुकसान पर। आज़िम राथर ओवर में अगली गेंद के साथ अल्ताफ हुसैन के लिए 16 गेंदों का सामना किया अल्ताफ हुसैन है और सिर्फ 1 रन आया उनके बल्ले से। अल्ताफ हुसैन के लिए गेंद की फ्लाइटेड गेंद का इंतजार किया और गेंद को खेल दिया ऑन साइड की जानिब।
स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन का इजाफा स्कोर में। स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन के इजाफे के साथ अब 68 हो चुका है। 4 विकेटों के नुकसान पर 11वें ओवर का खेल जारी। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। लाइव नशरियात को शेयर जरूर करें। अगली गेंद पैर से टकराई, लेकिन लेग स्टंप को मिस करती हुई गेंद, ऐसा हमें भी यहां से लगा और अंपायर की जानिब से भी इशारा आता हुआ। कोई नुकसान नहीं और किसी रन का इजाफा भी नहीं स्कोर में। 68 स्कोर, 11वें ओवर का खेल जारी। आजिम राथर जो है अपने कोटे का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। अभी तक सिर्फ 4 रन दिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बल्लेबाजों को बिल्कुल बांध के रखा गया है और कोई मौका नहीं मिल रहा है बल्लेबाजों को आजादाना स्ट्रोक खेलने का। आजिम राथर का ओवर मुकम्मल और मजमूई स्कोर है 68। 11 ओवर्स के बाद 4 विकेटों के नुकसान पर गुंडब्राट 11 का। And runs are completely dried up after the power play completed. After 6 overs, the score on board was 60, and now after 11 overs, it's 68. And you calculate that last 5 overs, just 8 runs have been scored. First ball of the fresh over, and he goes onside. Couple of bounces to the sweeper fielder, and they'll have to stay happy with a single. Even though Salman, who was going all guns blazing, he too is becoming slow now. You see, he was 28 of just 7 bowlers, and now he is on 35 of 22 bowlers. Still has a good strike rate, but Altaf needs to get a move on from here. Altaf needs to understand it's that kind of a situation for the game. You'll have to go for those shots whenever it's possible for you. In the meantime, for next ball off this over, and it's wide outside off stump. He was trying to push it away. Altaf. This has been the kind of a day for this batter. And you can see 19 balls and just 3 runs he has scored. And Nisar Ahmed Butt absolutely is mentioning that we'll be coming here at Janwara Sports Field with Zenigir Sports. And you're welcomed here, and Momin Malik as well. Qadir Mohammed has joined the next ball, and he lofts him on the onside. But straight to mid-wicket fielder. He's got good set of fielders at the boundary ropes. And this delivery, just a single, 71 for 4. 3 runs coming off 4 bowlers. Salman faces the next one. That's a good looking shot. But sweeper is there at the boundary line to the sweeper cover, and it gets a single. And these two batters have definitely done a good job. They have somehow managed to limit those chances of the bowlers of getting those wickets continuously. They have done a good job. This partnership is going nicely up in the air, in the gap as well. Beautifully played. And first signs of intentions from Altaf Hussain. He gets the first boundary of the day and works it down to the mid-wicket fence for 4. A boundary after a long time. A boundary after 35 bowlers for Gundrat 11. And can you believe it? Imagine in a T20 game you're hitting a boundary after 35 bowlers. And that defines how the batters have gone into the shell, and they define how the bowlers have bowled, and they've been in complete control of the game. In a commanding position now they are at after 11 overs. 12 overs though, it's 76 for 4. Just 8 more overs to go, and they surely will be trying to go up to 170, 180, and for that they will have to go for the big shots. This could be trouble. It's up in the air, and Azim Rathar strikes first ball of his final over. And he gets the well set batter. He was trying to go for the slog, gets the top edge, and he can just enjoy the replays. Flighted, and he was trying to go onside. He was never to the pitch of the ball, never in control of the shot as the ball flies up in the air. Wicketkeeper calls for it and grabs that one quite easily. A fairly simple chance, and it's a very soft dismissal. Salman, the set batter, departs, and half of the side is back into the pavilion. And before that ball, I was talking to you that 8 more overs to go, and in order to go up to 160, 170, you need at least 100 runs out of these 8 overs. So you don't have time out there to waste, and you go and you try to get well set. The batters have consumed way too many dots after the power play ended, and you got to give due credit to the bowlers as well. The way the spinners bowled, and they have completely caged Gundrat 11 and never giving them chances to score runs freely. And more problems for Gundrat 11, like it says, serious problems for the batting side. They're in a spot of bother. They are in tatters. They've been rattled
early by Imo Imtiaz. Then it was Aruz Pervez's double strike in that in his second over, and in the middle overs the spinners have controlled the game. Well, I can say they have been the bosses, and they were bowling, especially Mudassir Dar and Azim Rathar. And look at his spell of Azim Rathar. He's in his final over, and after 3.1 overs, the man has conceded just 4 runs. The new batter is in. First ball he faces, and off the back foot he goes. Ashik Amla it is, pushes that one away down to sweeper cover, and we'll get a single. Momin Malik, welcome, and Irshad Makhdoumi is watching from Punch. Nisar Ahmed Bhatt, and we got Khazir Mohammed and Murtaza Baba. Azim goes to Altaf. It's up in the air, and this should be taken. It is taken. It's a double wicket for Azim Rathar, and all the hard work which was done by Altaf Hussain, he perishes. He tries to go for the big shot again, and Azim, who has that mid-wicket out before that delivery was bowled, he brings that mid-wicket fielder in, and it's an absolute dolly to the fielder at mid-wicket. 77 for 6, and Gundbrat 11 in a deep trouble here. Tries to go for the big shot, gets the big top edge up in the air. As I said, a dolly for mid-wicket fielder. Azim doing the damage in his final over off the spell. 2 wickets, it's a double strike, and I could say phenomenal and magical bowling figures in a T20 game. 4 overs, you're bowling the 4th over. 3.3 overs, 2 for 5 runs. Economical and I could say staggering bowling figures. Phenomenal, and it's been a stellar show from Azim Rathar with the ball. And he was equally given that company by Mudassir. Don't forget a contribution as well, because he didn't allow the batters to score runs freely, and he didn't let them to score runs thick and fast. And that is what created pressure on the batting side. That's what created enormous pressure on Gundbrat 11, and they were never been able to get back on the track. And at this stage they're completely losing it with the bat. And the bowlers of MCC Bandipur have been on a roll with the ball. They have been fantastic. And 77 for 6. The new batter is in, Ejaz, and he's got 28 matches and 265 runs. So he hasn't got that much of experience in the batting department, and that's where it will be very volatile. It will be very tough for Gundbrat 11. You'll have to play those full quota of overs, but now getting into the tail and won't be easy for the batting side. First ball, and he nicely works it away using the wrist, pushes that one down to that deep fine region. Wicketkeeper goes quickly, and until he covers good ground, stops the ball, but the batters had enough time to come back for 2. A brace takes them to 79 for the loss of 6. Has been a tough going, has been a tough day, or I can say an off day for the batters of Gundbrat 11. They started well though. It was 60 for 4 after 6 overs, but after that the story has completely changed. It has been an absolute disaster and devastation and agony for the batting side. But I could say the bowling has been up to the mark, and they haven't let the batters to score runs thick and fast, or to score them freely. As Azim goes once again, and he's right up to the ball, watching it till the last moment. And Azim is just wearing a smile on his face. He knows had the batter missed it, this could have been trouble for him. And that is why he's got that smile. Next one, a quicker delivery outside off stump, and the batter was trying to push it away, gets beaten, and the ball goes into the gloves of wicketkeeper. 78 मजमूई स्कोर 6 विकेटों के नुकसान पर, और आज़िम राथर का बॉलिंग स्पेल जो है वो मुकम्मल होता हुआ, और क्या लाजवाब नफीतुली गेंदबाजी का मुजाहरा किया। 4 ओवर किए, 6 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की आज़िम राथर ने। कुल मिलाकर 13 ओवर्स का खेल मुकम्मल। गुंडब्राट 11 का स्कोर 78, 6 विकेटों के नुकसान पर। आशिक आमला और एजाज अहमद इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। आशिक आमला के लिए गेंद को खेल दिया, लेकिन फील्डर मौजूद। 30 गज दायरे के अंदर गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। यह पारी का इस वक्त 14वां ओवर जारी है। मुदस्सिर डार अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे। इस मतलब गेंद को ऑन साइड की तरफ खेला, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन बना, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल। तो 2 रन का इजाफा स्कोर में, स्कोर बढ़ता हुआ 80, 6 विकेटों के नुकसान पर। मुदस्सिर डार
अपने कोटे का आखिरी ओवर फेंक रहे हैं। इससे पहले 14 रन दिए मुदस्सिर डार ने। मुदस्सिर एक मतबा फिर गेंद की फ्लाइटेड ऑफ स्टंप से बाहर और गेंद को खेल दिया। थोड़ी देर गेंद हवा में है लेकिन फील्डर उस ओर मौजूद। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। इजाज अहमद अब सामना करेंगे मुदस्सिर डार की गेंद का। मजमूई स्कोर है 81, 6 विकेटों के नुकसान पर। मुदस्सिर डार सामना करेंगे उनकी गेंद का। इजाज अहमद गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, पॉइंट पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 81 स्कोर, 6 विकेटों के नुकसान पर। और मुदस्सिर डार अपने कोटे में आखिरी ओवर फेंक रहे हैं और 5वीं गेंद के साथ। अभी तक इस ओवर से 3 रन आए। मुदस्सिर डार की यह गेंद अच्छी गेंद, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 81, 6 विकेटों के नुकसान पर। मुदस्सिर डार अपने कोटे की आखिरी गेंद के साथ। यह पारी का 14वां ओवर जारी है। इसके बाद मजीद 6 ओवर्स का खेल बाकी। और फुल टॉस, गेंद को खेल दिया 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर। लेग ब्रेक गेंद करने की कोशिश की थी लेकिन फुल टॉस दे बैठे और बाकी जो है ताकत और प्लेसमेंट का सही इस्तेमाल और गेंद जो है हवाई यात्रा से 6 रन के लिए। शौकत कीमा हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोपोर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अहमद फिरदौस हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मजमूई स्कोर हो चुका है 92 बल्कि 87 हो चुका है स्कोर। 6 विकेटों के नुकसान पर 14 ओवर्स का खेल मुकम्मल। और अब 15वें ओवर में जावेद अहमद को लाया गया है 15वें ओवर में। और जावेद अहमद हमसे दूर भागते हुए छोटा सा रनअप, 3 या 4 कदमों का रनअप। गेंद को खेल दिया, हवा में शॉट, एक और बेहतरीन खूबसूरत छक्का आता हुआ बल्लेबाज आशिक आमला के बल्ले से। और इन 6 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 93 हो चुका है 6 विकेटों के नुकसान पर। जावेद अहमद की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया आशिक आमला ने और गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए। शौकत कीमा, अहमद मुदस्सिर और इनके साथ साथ इरशाद मखदूमी हमारे साथ पुंछ से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जावेद ओवर में अगली गेंद के साथ 15वें ओवर का खेल जारी है। आशिक आमला के लिए ऑन साइड की तरफ एक और यहां पे छक्का आता हुआ, एक और छक्का आता हुआ ऑन साइड की तरफ, इस मर्तबा स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से। और आशिक आमला के बल्ले से आने वाला ये दूसरा छक्का। मजमूई स्कोर हो चुका है इन 6 रन की मदद से 99, 6 विकेटों के नुकसान पर 15वें ओवर का खेल जारी। अहमद मुदस्सिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली गेंद आशिक आमला के लिए, गेंद को खेल दिया जब तक मिड विकेट से फील्डर आते। 1 रन बनाने का मौका, 1 रन हासिल। शफी परा भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जावेद अहमद बॉलिंग मार्क पर एक मरतबा फिर 3 या 4 कदमों का रनअप। 100 रन यहां पे मुकम्मल होते हुए गुंडब्राट 11 के। अगली गेंद और बैट और पैड साथ मिलाते हुए जोरदार अपील और आउट करार दिया गया है। आपको रीप्ले में दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये विकेट गिरी। आप रीप्ले में अंदाजा लगाइए, ये आपको दिखाना चाहेंगे। बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेलने की कोशिश लेकिन गेंद की लाइन को मिस किया और अंपायर ने बल्लेबाज को विकेटों के सामने पाकर उंगली फिजा में बुलंद की। दोबारा से आपको जो है जूम करके दिखाना चाहेंगे किस तरह से ये विकेट गिरी। यहां पर ये 7वीं विकेट गिरी है। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये विकेट गिरी ताकि आप भी घर बैठे जो है सही अंदाजे से जज कर सके। ये आपको दोबारा से हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से गेंद जो है पैड पर जाके लगी। शफी परा, अहमद मुदस्सिर बहुत बहुत शुक्रिया। शौकत कीमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आपको दिखाना चाहेंगे और बिल्कुल बैट और पैड साथ मिलाते हुए खेलने की कोशिश की थी। जोरदार अपील जावेद अहमद की और अंपायर ने थोड़ा सा वक्त लेकर अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। तो ये विकेट गिरते हुए यहां पर 7वीं 100 के मजमूई स्कोर पर राशिद खालिक आए हैं नए बल्लेबाज। बशीर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहामा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। तारिक अब्दुल्ला आलूसा बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़े हैं, इलाहीपुरा आलूसा बांडीपुरा से बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जावेद अहमद नए बल्लेबाज के लिए जो कि अभी अभी आए हैं बल्लेबाजी के लिए। राशिद खालिक
100 है मजमूई स्कोर गुंड ब्राट 11 का 7 विकेटों के नुकसान पर। शेख जावेद ओवर में अब 5वीं गेंद के साथ। हालांकि पहली 2 गेंदें 2 बड़े छक्के आए थे आशिक आमला के बल्ले से, लेकिन इसी ओवर में विकेट हासिल की। अगली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, गेंद को खेल दिया, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 100 मजमूई स्कोर 15वें ओवर का ठिकाना बाकी। अगली गेंद बोल्ड कर दिया है, बैक फुट पर खेलने की कोशिश, गेंद की लाइन को मिस किया, कुछ हो गई और इस तरह से ये 8वीं विकेट गिरती हुई। 8वीं विकेट गिरती हुई। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। शेख जावेद के ओवर से कुल मिलाकर अगरचे 13 रन आए, लेकिन 2 विकेटें भी आई और 100 के मजमूई स्कोर पर 8 विकेटें गिर चुकी है गुंड ब्राट 11 की। अब देखना होगा मजीद 5 ओवर्स क्या मुकम्मल खेलने में कामयाब होगी टीम, या फिर उससे पहले टीम सिमट जाएगी। बशीर अहमद मीर हमारे साथ जुड़े हैं और रामी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशिक आमला, द डेंजर आमला, तारिक अब्दुल्ला और इनके साथ साथ मंसूर डेकोरेशन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। The 8 wickets down on just 100 on board, and you can see Ashiq Amla at the non-strikers, and he looks frustrated and he was kicking the turf in frustration. You can see Rashid Khaliq's wicket, and nothing a batter could have done about that as the ball capped to low and it sneaks through and hits the timber. Middle stump goes for the toss. As you said that previously, it was a bit expensive from the bowler, but he's got those 2 wickets and has rattled the innings of Gundrat 11 completely. 100 for the loss of 8. It is after 15 overs, 5 more overs to go, and Bashir Ahmed Mir is mentioning that was a plum LBW wicket, and umpire had no hesitations in raising his finger. It has been a staggering efforts with the ball from MCC Bandipora. They got all the basics covered in this game. They've done half of the job is done, and they know this thing. They've done the job with the ball, and as you can see, they're on the threshold to limit the scoring chances of the batters and to get them all out as soon as possible. First ball, and Arush Parvez is back into the attack, and it was his spell in that final over of the power play which completely changed the course of the game. He got that double strike in that over. That is where the side of Gundrat 11 lost the plot, lost their way, and in this game after that it was no coming back for them, and they lost the track completely. Arush Parvez in his third over, 2 for 4 until now. Economical stuff with the ball, and Nam in the wickets column. John Meir faces the next ball, and he neatly works it down to short mid wicket. The man is inside the ring, and there is no chance of a run. 5 more overs to go, and it will be an uphill task. It will be a mountain to climb for the batters to play those full court of overs with strike bowlers. Having those overs left, they have Shah Ilyas to come in, Imtiaz, and Arush Parvez will be bowling those 2 overs, and it will be a bit tough job for the batting side to bat out there. But John Meir needs to give that company to Ashiq Amla. He's batting so well. Shot down the leg side, and you could see by the reaction of the bowler, was it an edge without a it? No, umpire signals wide, and that wide takes the score to 102. Mansoor is watching us on YouTube, and Bashir Ahmed Mir, Rami and Tariq Abdullah. And we got Bashir Ahmed watching from Rahama Rafiabad. Aruj once again from the far end. It will be his third ball to Ashiq Amla, and he's the key man, Ashiq Amla. Oh, that's a beautiful ball. Absolutely cracker of a delivery, and Ashiq Amla had no answers where the ball was going. He had no clues. He was just dancing on that delivery, and has been completely beaten, even though wicketkeeper was beaten all ends up, and it misses everything, it defeats everything, goes down to third man, and they steal a single, and each and every run is valuable from here on. It's judicious from here on, and Ashiq Amla and John Meir, they need to bat deep from here on, at least to give their team a respectable score on board where you can bowl upon. Next ball is shot, it's up in the air, gone this time. Third one for Arush Parvez. A ripper of a delivery, a rib snorter that was, and the batter was never in position. Oh, you can see the replays as well, will give us a clear angle.
Rouge steaming in bowlers with pace, and this one just jumps off the surface, catches the shoulder off the bat, and this time wicketkeeper completes fairly a simple catch. Ninth one goes down. As I told you earlier, that it's very tough. It's an uphill task. It's a mountain to climb for the batters to play those 30 deliveries out there with the premium bowlers bowling. They bowled in the power play and they absolutely broke the backbone of the batting side. And you can see Gundbrat 11 have been completely demolished. The batting lineup has been completely demolished. Aruj Parvez gets his third of the day. 3 for 6. And look at the bowling figures. We talk about Azim Rathor as well. 4 overs, 1 maiden, 2 for 6. Then in the middle overs it was Mudassir Dar's brilliant spell. At the top of the order it was Imu Imtiaz who set the tune. And all the bowlers have been used by the captain. They all lived up to the expectations. So Aruj Parvez, he's in his third over, 3 for 6. It's Imu Imtiaz, the captain at number 11 for the team, and who will be under a serious pressure here. He knows his team is just at the back foot and faces the first ball of his innings, and he pushes that one away to cover, and there is no addition to the total. Could see just 104 on board, and Ashiq Amla was batting so well at the other end, and none of the batters were able to provide him that support which he needed, and just needed to work the ball in those gaps and bring Ashiq Amla on strike, but they failed to do so. And you can see the result is in front of your eyes. You kept losing wickets, and you are out of the race in the meantime, I could say, because you know the kind of batting depth Bandipora have got. Terrific batting side, a compact and a formidable batting side they have, and somehow Imu Imtiaz keeps the ball away. Its 16 overs have been completed in 104 for the loss of 9. And Ashiq Amla will hold the key for the side. If he can play out of those 24 balls, he can play those 20 odd deliveries, and up to those 20 deliveries somehow he can manage to get Gundbrat 11 up to 140, 150, but looks very tough from here on. And Rafiq Nisar is sending in his love from the official handler Boom Boom Synergy. He will be the 17th over and just 3 more overs to go. Ashiq Amla, he's got a job to do. He's got a lot of responsibilities. He's going to carry the burden of the team. First ball and leading edge. Rolls to backward up point, and there is no addition to the total. With Momin Malik mentioning it's completely a team effort from Bandipora, and they have done a fantastic job with the ball. And as I said, half of the job is done. Pulls away in the air and just over the fielder for 6. For a moment I thought that mid-wicket fielder is interested, but it's a matter of inches as the ball carries all the way. Ashiq Amla, a beauty with the bat. Short half tracker, off the back foot he goes. Mid-wicket was interested for a while, but he was just a spectator as he watches the ball sail over his head. He's fighting a lone battle here. He's been the warrior for the side, but you see he is just fighting it alone. He's got just one man out there to accompany him. It's 1-1-10 for 9. Next ball from Javed down the leg side. Ashiq works it on the onside. Oh, this could be trouble. This could be it. And Imu Imtiaz, he's been sold down the river. He was charging in for single, and Ashiq was never interested. And this is an absolute brain fade there by the captain. What have you done? You still had a chance to go up to 130, 140. But unfortunate way to get out. And Gundbrat 11 are all out on 110. And we are done with the first innings. So do join us after a short break with the chase of Bandipora until... तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रन चेज में उतरी है एमसीसी बांडीपोरा की टीम और जीत के लिए दरकार 111 रन। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं और जरा देर बाद जो है मैच का दूसरी पारी का बाज़ाब्ता तौर आगाज होगा। आपको जानकारी देना चाहेंगे गुंडब्राट 11 और एमसीसी बांडीपोरा के दरमियान जानवारा क्रिकेट लीग का ये अहम मुकाबला इस वक्त जारी है और गुंडब्राट 11 की पूरी टीम 16.3 ओवर्स में 110 रन पर सिमट गई। एमसीसी बांडीपोरा को जीत के लिए दरकार 111 रन। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं और जरा देर बाद जो है
दूसरी पारी की पहली गेंद फेंकी जाएगी और बॉलिंग मार्क पर है राशिद खालिक, सामना करेंगे मुदस्सिर बल्कि मीर सुहेल। गेंद की ऑन साइड की तरफ गेंद को खेल दिया है और गेंद सीधे 6 रन के लिए मैदान से बाहर। 6 रन के लिए गेंद मैदान से बाहर। आपको रिप्ले में दिखाना चाहेंगे, पहली ही गेंद सीधे 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। तो खाता खुलता हुआ एमसीसी बांडीपोरा का छक्के के साथ और बॉलिंग मार्क पर राशिद खालिक ओवर में दूसरी गेंद के साथ सामना करेंगे एक मर्तबा फिर मीर सुहेल। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशरियात में जुड़ने के लिए। और यह मुकाबला जारी है जानवारा स्पोर्ट्स फील्ड पर जानवारा क्रिकेट लीग के तहत। राशिद खालिक अपने ओवर में दूसरी गेंद के साथ मीर सुहेल के लिए। ऑफ साइड पर 6 खिलाड़ी तैनात, बल्कि जी हां 6 खिलाड़ी तैनात। थर्ड मैन को बाउंड्री से दायरे से बाहर किया गया है। अगली गेंद राशिद की बैक फुट पर गेंद को हल्के हाथों के साथ खेला। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइक एंड से मुदस्सिर डार, लेकिन मना किया। सुहेल ने वापस अपनी क्रीज तक पहुंचने में कामयाब मुदस्सिर डार। यह सलामी जोड़ी जो है एमसीसी बांडीपोरा के जारहाना किस्म की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं मुदस्सिर और साथ में सुहेल। मीर सुहेल सामना करेंगे राशिद खालिक की गेंद का। बैक फुट पर गेंद को खेल दिया है, फील्डर मौजूद और शॉर्ट कवर पर उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। पहले ओवर का खेल जारी है। 6 मजमूई स्कोर छक्के से आगाज हुआ दूसरी पारी में एमसीसी बांडीपोरा का। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव नशरियात में हमारा साथ निभाने के लिए। राशिद खालिक ओवर में अगली गेंद के साथ। यह ओवर की चौथी गेंद होगी। सामने मीर सुहेल के लिए लेग स्टंप पर गेंद को खेल दिया। एक और बड़ा स्ट्रोक और इस मर्तबा देखना होगा 6 रन का दोबारा से इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से और इन 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 बिना किसी नुकसान के। दूसरा छक्का आता हुआ इस ओवर में मीर सुहेल के बल्ले से लेग स्टंप के आसपास गेंद को रखा इस मर्तबा राशिद खालिक ने और गेंद को भेज दिया 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर मीर सुहेल ने। राशिद खालिक ओवर में 5वीं गेंद के साथ। थर्ड मैन को दायरे के अंदर खड़ा किया गया है और अब लॉन्ग ऑन पर फील्डर को तैनात किया गया है। राशिद खालिक की गेंद एक मरतबा फिर लेग स्टंप के आसपास, लेकिन इस मरतबा पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। गेंद को फील्ड किया गया 30 गज दायरे के अंदर। रन बनाने का कोई मौका नहीं। राशिद खालिक ओवर में आखिरी गेंद के साथ। यह पहले ओवर का खेल जारी। जीत के लिए दरकार 111 रन, अब 99 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए, जबकि पहले ओवर का खेल जारी। बॉलिंग मार्क पर राशिद ओवर में आखिरी गेंद के साथ। 12 रन आए अभी तक इस ओवर से और ये 12 रन जो है मीर सुहेल के खाते में गए। 2 छक्के आए मीर सुहेल के बल्ले से। राशिद कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया और गेंद पलक झपकते ही सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। आखिरी गेंद पर चौका आता हुआ मीर सुहेल के बल्ले से और 16 मजमूई स्कोर। पहले ओवर का खेल मुकम्मल। Welcome back to the run chase, and what a start this is for MCC Bandipora. First over and 16 runs have been scored, and it's Mir Suhail, the danger man, with a bat, starting with a towering 6. Then 6 over fine leg, and now on to the final ball. He dances down the track, and that was an absolute tracer bullet off the bat. It races away down to the cover boundary for 4. You have just 104, 111 on board. You're chasing the score, and this is a furious start with the bat. John Mir has got the ball in hand, and he's going to operate from the far end. And it will be very tough to stop the run flow. You know, both the batters bat with cement, and we talk about Mudassir Dar. He's a brutal hitter off the ball, and so does Mir Suhail. He doesn't waste any time out there. He likes to go from the word go. He likes to go from the very first ball. And that was quite evident today. First ball he faced it, and he smoked the bowler into the stands for 6. So 6 balls all faced by Mir Suhail, and he has scored 16. Rashid Khalik proving to be expensive, costed them arms and legs in that first over. John Mir with the first ball of his first over, and first ball he's been greeted with a thumping cut shot, and the ball races away down to the cover region.
The fielder is giving chase until the ball stops on his own, and 2 more runs have been scored. First ball wide outside off stump, and that was hit really hard. I told you earlier about the batters are so dangerous with the bat. Even though they don't waste any time out there, they will love to go from the very first ball, and that was quite evident. That was shown by Mir Suhail when he faced the first ball of the chase. John Mir over the stumps for the second time. Shot pulled away on the onside, up in the air. Will it go down to the boundary? No, it doesn't. Ashik Amla covers good ground, and he stops the ball near the boundary ropes. A single and positive intent from the batters, and they know it's just 111 to chase, and they will try to chase it down in a quick time to get a big victory here, and putting pressure on the bowlers. 19 without loss it is, and 92 runs away to register victory. It's a small little chase for MCC Bandipora. John Mir goes once again to Suhail. That's a better line. That's what you need to bowl, onto that off stump line, and see if you can get some bounce, if you can get some help off the surface. But he can trouble the batters, and this time he troubles the batter with an extra bounce. And Mir Suhail, he knows he just goes one way, he just swings his bat, and he was once again going for the wild swing, but doesn't connect at all, goes into the gloves of wicket-keeper. So both the batters, a big cheese they are, and quite have a great influence and impact on the game. Once again he tries to swing it away, gets an inside edge, goes to the fine leg boundary for 4. And here, when you win a day, when you carry the day, luck favours you as well. And it is your day, you can win it from everywhere, no matter where the runs come from. Even those edges will go down to the boundary, and that's where Mir Suhail was trying to launch him out of the ground, but he gets an inside edge which goes down to the fence for 4. 23 without loss, a start. That is what MCC Bandipura would have liked for a 111 chasing. In the meantime, John Mir goes once again to Suhail, and he goes down the ground, up in the air, and way back into the stands. 6. He backs away, exposing all the stumps, and this time he lofts him down the ground. He goes, and the ball kept sailing in the air. It's a skyrocketing 6 as he moves to 26 of just 9 balls. He's doing that damage at the top with the bat. Absolute carnage from Mir Suhail. He's so dangerous with the bat. When he's got a bat in hand, he can swing it, and he's swinging it so hard, and he is absolutely thrashing the bowlers. Sajjad Magre, the first viewer commenting, watching us from Kulgam. F. Irfan, Walaikum Salam, brother, and we got Amir watching from Amir Hardware Store, Rahama. John Mir goes once again to Suhail. This one has been smoked and smashed. Biggest of the day. That's a massive strike. Oh, what a shot that is. That is gone all the way. Oh, terrific shot. Suhail once again backs away and hits it really hard. Hits it down to the mid-wicket boundary. He just knows one way, as I told you earlier. He knows one way. He likes to go after the bowlers. He is not going to waste any time out there. He's got 3, 4 sixes until now, and he's batting on 32 of just 10 bowlers. 320 the strike rate for this man. And it's a no ball as well. You're adding to the miseries, rubbing salt to the injuries of the bowler there. And it is going to be a free hit. He is not sparing those legitimate deliveries, where this free hit ball is going. We'll have to wait and watch. Serious batter he is, an absolute carnage this is. With the bat, 36 after 1.5 overs. DRM MCC Bandipora it is. They got a chase of 111. Again is Gundrat 11. But Mir Suhail is always going to haunt them in their dreams. The way he is smoking the leather, he is beating the leather to all corners of the ground. Thank you very much, brother Amir, for joining the live broadcast. And it will be the final ball. You got a license to go big. A free hit ball is coming up, and the caliber of player, the kind of player Mir Suhail is,
I guess he's not going to miss out on that free hit ball, and he goes again. This is up in the air and goes one bounce down to the boundary for 4. What an over this is turning out to be. And he's playing with the field, he's playing with the bowler, exposing all the stumps, thumps him down the ground, down to the boundary. And it's 40 without loss, 24 coming off the previous over, and Mir Sohail has just arrived and he is making a statement with the bat. तो 40 मजमूई स्कोर हो चुका है और सिर्फ 2 ओवर्स का खेल मुकम्मल। जॉन मीर का ओवर महंगा साबित होता हुआ, जिसमें 24 रन आए और 11 गेंदों पर 36 रन बनाए मीर सोहेल ने। 11 गेंदों का सामना किया और 36 रन पर खेल रहे हैं मीर सोहेल। ये मुकाबला जो है अब एकतरफा मुकाबला लग रहा है। अगर विकेटें ना गिरी, यहां विकेटें जो है हासिल करने की जरूरत गोंड विराट 11 की टीम को। तीसरे ओवर की पहली गेंद, बैट और पैड साथ मिलाते हुए गेंद को खेला और खेलते ही दौड़ पड़े। रन मुकम्मल होता हुआ और मुदस्सिर डार थे स्ट्राइक पर। अब जो है मीर सोहेल स्ट्राइक पर आ चुके हैं, जिन्होंने 11 गेंदों का सामना किया और 36 रन की पारी खेली। 300 से जायद का स्ट्राइक रेट मीर सोहेल के पास। बट तारिक हमारे साथ जुड़े हैं, उमर परे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी दे रहे हैं कि सोनावारी से ताल्लुक है मीर सोहेल का। हिटमैन ऑफ सोनावारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मीर सोहेल सामना करेंगे अब अगली गेंद का, गेंद की और एक मरतबा फिर, और इस मरतबा पहले से भी बड़ा छक्का आता हुआ मीर सोहेल के बल्ले से। गेंद मैदान से बाहर जाके गिरी है और अब यहां गेंद के आने का इंतजार होगा। इस मरतबा पहले से ही इरादा किया था, विकेटें छोड़ दी थी और गेंद को भेज दिया मैदान से बाहर 6 रन के लिए। सोहेल के बल्ले से आने वाला गालिबन ये चौथा छक्का है और इनका इंफरादी स्कोर 42 हो चुका है, जबकि मजमूई स्कोर 47। तीसरे ओवर का खेल जारी है, तीसरे ओवर का खेल जारी है और मजमूई स्कोर है 47। 111 रन का हदफ मिला है। मजीद जो है यहां से रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 64 रन चाहिए अभी मुकाबला जीतने के लिए। हालांकि यह पारी का सिर्फ तीसरा ओवर जारी है। बॉलिंग मार्क पर राशिद खालिक महंगे साबित होते हुए, इससे पहले जॉन मीर, अब राशिद खालिक। मीर सोहेल के लिए ऑप्शन से बाहर, एक और बड़ा स्ट्रोक और गेंद एक टप्पा खाने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन को छू गई 4 रन के लिए। मीर सोहेल के बल्ले से आने वाला एक और चौका। उमर परे, रियान फेरोज हमारे साथ जुड़े हैं। बट तारिक के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और स्कोर बढ़ता हुआ 51। तीसरे ओवर का खेल जारी है। 15 गेंदों पर 51 रन आए हैं एमसीसी बांडीपुरा के लिए और 13 गेंदों का सामना किया मीर सोहेल ने, जिन्होंने 46 रन बनाए। मीर सोहेल ने 13 गेंदों का सामना किया, 46 रन बनाए और सिर्फ एक स्ट्रोक दरकार उन्हें अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। सिर्फ एक स्ट्रोक दरकार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए। इरफान बहुत बहुत शुक्रिया और रियान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगली गेंद और इस मर्तबा बोल्ड कर दिया है, थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद सीधे मिडिल स्टंप को छू गई। आपको थोड़ा सा जो है रिप्ले में दिखाना चाहेंगे किस तरह से बोल्ड हुए मीर सोहेल 46 रन की आतिशी पारी खेलने के बाद। 14 गेंदों का सामना किया, 46 रन बनाए और राशिद खालिक ने बोल्ड किया मीर सोहेल को। मीर सोहेल जो है वो आउट होकर पेविलियन वापस जाते हुए। पहली विकेट गिरी एमसीसी बांडीपुरा की और मजमूई स्कोर है 51 के स्कोर पर यह पहली विकेट गिरी एमसीसी बांडीपुरा की। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और लाइव नशरियात को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि बाकी दोस्त भी हमारे साथ जुड़ सके और इस मुकाबले का आनंद ले सके। अब देखना होगा नए बल्लेबाज कौन से आए हैं जो साथ निभाएंगे मुदस्सिर डार का साथ निभाएंगे और राशिद खालिक की गेंद का सामना करेंगे। 51 मजमूई स्कोर, 60 रन चाहिए अभी भी मुकाबला जीतने के लिए, जबकि ओवर के बाद 7 ओवर्स का आना बाकी। जाहिद वानी आए हैं 153 मैचेस में
जो है 2000 से जायद रन्स जाहिद वानी के पास। जाहिद वानी राशिद खालिक बॉलिंग मार्क पर, ओवर में 5वीं गेंद के साथ जाहिद खालिक जो है वो सामना करेंगे, बल्कि जाहिद वानी जो है सामना करेंगे राशिद खालिक की गेंद का, और राशिद खालिक जो है बॉलिंग मार्क पर अपने ओवर में 5वीं गेंद के साथ। अभी तक 27 रन दिए राशिद ने और 1 विकेट हासिल की मीर सुहेल के रूप में। अब नए बल्लेबाज के लिए गेंद की विकेट कवर करके गेंद को खेलने की कोशिश, नाकाम, ऑप्शन से थोड़ी बहुत बाहर गेंद, और गेंद गई विकेट कीपर लतीफ दिया के दस्तानों में। 51 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर राशिद अपने ओवर में आखिरी गेंद के साथ। यह पारी का तीसरा ओवर जारी है और स्कोर है 51, 1 विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए दरकार है एमसीसी बांडीपोरा को 111 रन। इफो इरफान बहुत बहुत शुक्रिया। रियान फिरोज भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। राशिद ओवर में आखिरी गेंद के साथ, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद के साथ। सामने है जाहिद वानी, जाहिद के लिए गेंद की बैक फुट पर विकेट कवर करके गेंद को खेला, फील्डर मौजूद, शॉट मिड विकेट पर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओवर मुकम्मल, 3 ओवर्स का खेल मुकम्मल। मजमूई स्कोर है 51, 1 विकेट के नुकसान पर। 51 मजमूई स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। इफो इरफान बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप हमें यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, जेके स्पोर्ट्स डिस्कवरी, और उसके अलावा आप हमें क्रिक हीरोज ऐप पर भी देख सकते हैं। राशिद खालिक ने 2 ओवर किए, 27 रन दिए और 1 विकेट। जो वाहिद विकेट अभी तक गिरी है मीर सुहेल के रूप में, वो राशिद खालिक के खाते में गई। अब चौथे ओवर का खेल शुरू होगा और सामना करेंगे चौथे ओवर में गेंद का मुदस्सिर डार, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना करते हुए 4 रन बनाए हैं। मुदस्सिर डार अल्ताफ हुसैन की गेंद का सामना करेंगे। अल्ताफ हुसैन अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे गेंद की और गेंद को खेल दिया। फील्डर गेंद के पीछे देखना होगा क्या रोक पाएंगे, जी नहीं, और गेंद जो है बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए। ये चौका आता हुआ मुदस्सिर डार के बल्ले से, और मुदस्सिर डार जो है इस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 55 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर डार एक मतलब फिर जो है सामना करेंगे। तारिकुल इस्लाम हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम हमारे साथ जुड़ने के लिए। अल्ताफ हुसैन ओवर में अगली गेंद के साथ मुदस्सिर डार के लिए, जिन्होंने 8 रन बनाए, और अगली गेंद का सामना करेंगे। तो उछाल लेती हुई गेंद ऑफ से बाहर, और गेंद गई सीधे विकेट कीपर लतीफ दिया के दस्तानों में। मजमूई स्कोर 55, 1 विकेट के नुकसान पर। 56 रन अभी भी दरकार मुकाबला जीतने के लिए, जबकि इस ओवर के बाद 16 ओवर्स का खेल बाकी रहेगा। ये चौथे ओवर का खेल जारी है और एक आतशी पारी खेली मीर सुहेल ने 46 रन की, और उन्हें बोल्ड किया राशिद खालिक ने। इसी बीच अल्ताफ हुसैन अगली गेंद के साथ, गेंद की अच्छी गेंद, इस मतलब अच्छी गेंद और अच्छी लाइन के साथ गेंद को फेंका अल्ताफ हुसैन, और गेंद गई लतीफ दिया के दस्तानों में। ये चौथे ओवर का खेल जारी है और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जानवारा क्रिकेट लीग के तहत खेला जाने वाला ये 5वां मुकाबला है, और कल यहां पे दिन में मजीद 2 मुकाबले खेले जाएंगे। अल्ताफ हुसैन ओवर में अब 5वीं गेंद के साथ सामना करेंगे उनकी गेंद का एक मतवा फिर मुदस्सिर डार। कदमों का इस्तेमाल, गेंद को खेला, हालांकि पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, उस और कोई फील्डर तैनात नहीं, और गेंद आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन को छूती हुई 4 रन के लिए। मुदस्सिर डार के बल्ले से आने वाला एक और चौका, और इन 4 रन के साथ स्कोर जो है बढ़ता हुआ 59, 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल जारी और अभी भी रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए 52। 59 हो चुका है स्कोर। चौथे ओवर का खेल जारी है और चौथी गेंद ओवर की, बल्कि 5वीं गेंद फेंकेंगे अल्ताफ हुसैन। अभी तक इस ओवर से 8 रन आए और मुदस्सिर डार ने
इस ओवर में 2 चौके लगाकर 8 रन हासिल किए। मुदस्सिर डार एक मरतबा फिर सामना करेंगे अल्ताफ हुसैन की गेंद का। अल्ताफ हुसैन बॉलिंग मार्क पर, लंबा बॉलिंग रन अप अल्ताफ हुसैन का ओवर द विकेट। अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की बैकफुट पर हवा में खेला गया स्ट्रोक, लेकिन नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। हालांकि कैच हासिल किया था स्लिपर नसीर अहमद ने, लेकिन पहले ही नो बॉल का इशारा आता हुआ और कहा जाएगा कि खुशकिस्मत रहे मुदस्सिर डार, खुशकिस्मत रहे मुदस्सिर डार। और यहां जो है अब फ्री हिट होगी अल्ताफ हुसैन के ओवर की और देखना होगा बड़ा स्ट्रोक खेलने का मौका मुदस्सिर डार के पास। मजमूई स्कोर है 60, 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन दरकार। अब देखना होगा फ्री हिट पर कितना फायदा उठाने में कामयाब होंगे मुदस्सिर। ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 61, 1 विकेट के नुकसान पर 3.4 ओवर्स के बाद 50 रन मजीद दरकार मुकाबला जीतने के लिए, जबकि 97 गेंदें अभी बाकी है। बल्कि जी हां, 97 गेंदें अभी बाकी है। यह पारी का चौथा ओवर जारी है और रन दरकार 50 मुकाबला जीतने के लिए। अगली गेंद ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस मतबा बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेकिन फील्डर मौजूद, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 30 गज दायरे के अंदर रन बनाने का कोई मौका नहीं। अब ओवर में आखिरी गेंद के साथ अल्ताफ हुसैन 61 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। मुदस्सिर डार कुल मिलाकर 12 रन बनाए और 9 गेंदों का सामना किया मुदस्सिर डार ने। तारिकुल इस्लाम इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आखिरी गेंद के साथ अल्ताफ हुसैन, एक तरफा मुकाबला साबित होता हुआ अभी तक यह मुकाबला, और पहले से ही विकेट छोड़ दी थी। एक मरतबा फिर नो बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर की जानिब से। इस दौरान दोनों बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और दूसरे रन का कुल मिलाकर 3 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर में। और एक मरतबा फिर जो है ये आखिरी गेंद फेंकनी होगी अल्ताफ हुसैन को। काफी लंबा ओवर जाता हुआ अल्ताफ हुसैन का 64 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए एमसीसी बांडीपोरा को। एमसीसी बांडीपोरा को 47 रन अभी भी चाहिए, जबकि इस ओवर के बाद 16 ओवर्स का आना बाकी। अगली गेंद, यह ओवर की आखिरी गेंद होगी राशिद बल्कि अल्ताफ हुसैन की। गेंद के और इस मरतबा बल्ले और गेंद के दरमियान सही कनेक्शन और गेंद सीधे 6 रन के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर। तो मुदस्सिर डार के बल्ले से आने वाला यह पहला छक्का और स्कोर बढ़ता हुआ 70 हो चुका है। 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर्स का खेल मुकम्मल। 96 गेंदें, रन दरकार 31 बल्कि 41 मुकाबला जीतने के लिए। There isn't much left in the game now. Just 41 runs away, and the way they're going, it looks like the chase will be completed inside those 10 overs. And nothing has gone right for Gunrat 11 today. They didn't bat well. The batters let them down. And now just 111 to defend. Nothing the bowlers could have done about this. You're up against a formidable batting side. You're up against a tough batting side. And you can see clearly results visible on your mobile screen as you're watching the game. 4 overs, 70 for 1. It was Mir Sohail's show with the bat today. He was going all guns blazing and he was hitting them to all corners of the ground. And unfortunately, he is back into the pavilion, but the tune he set to the team to this chase was commendable. And first ball of the fresh over, he was trying to scoop it away on the onside, doesn't time it well, still gets a single. Mir Sohail is back into the pavilion, 71 for the loss of 1, and promises to be a one-sided game where MCC Bandipora have been wholly and solely dominant from the very first ball of the game today. They covered all the basics right, they bowled well, they fielded well, and now you can see their batting is looking so dangerous. And they're dictating terms and to the coming matches to the teams who are participating in this tournament and up against MCC Bandipora. They're sending those alarming situations. This one up and over, point, and will it go down to the boundary? Have to wait and watch. Yes, it does. Once again the ball travels to the fence for 4. Mudassir Dar, I told you Mudassir Dar and Mir Sohail when they arrived to the crease,
It was always going to be very tough for the bowling side of Gundrat 11 to stop the carnage, as both the batters have that same nature of batting. They both bat with positive approach. They both love to go after the bowlers. They both play an attacking cricket. In the meantime, next ball, and again he was forcing it on the up. Gets that thick outside edge to backward a point. There is a fielder inside the ring, and the batters doesn't think of a single. 75 for 1. Just 36 runs away. In the meantime, Ajaz goes once again down the leg side. It is, should be a wide. They're calling for a single, and they have got the single as well. 77 for 1. Saku Sakib and Royal Trading. He's mentioning that if the chasing team chases the score, that's 112. He's mentioning a cash prize of 2,000 rupees as well. Next ball, he goes over cow corner. This time he targets the mid-wicket region. One bounce into the boundary for 4. That is absolute carnage with the bat. They're going hammer and tongs here. And you see the batters just want to finish it as soon as possible so that they can take an early walk back to their respective homes. 81 for 1, just 30 runs away, and we're in over number 5. Ajaz. He goes once again to Zahid Wani. Zahid drives on the up and in the gap as well. It doesn't even matter, it's in the air and well over the fielders. And they're just picking those boundaries at field. They're just playing with the field, just having a fun out there. And this is incredible hitting. Back-to-back fours, 85 for 1 now. We still have got a ball to go, Ajaz, and he'll be thinking that when I am going to finish this over, has conceded already 15. The bowlers have been utilized. They've been all expensive. They've been all leaking runs. The final ball, outside edge, flies to the third man boundary for 4. Once again, hat-trick of fours. It's 89 for 1. 5 overs have been bowled. And just 22 runs away. And I told you earlier, this chase is going to be finished inside 10 overs. Complete dominance, and this is astonishing stuff with the bat. DRM MCC Bandipora. Looking different kind of a team here in Janwara Cricket League, as I told you, sending those alarms to upcoming teams when they're going to lock horns against them. They covered all the basics. They've done everything right. The bowling looks solid, the batting looks compact, the team, the fielding looks flexible. You got a complete package team here at Janwara Cricket League, and the way they have played the first game looks like they are definitely going to be the hot favourites. Altaf Hussain will be bowling from the commentary box end. 89 for 1. It is after 5 overs. Mudassir Dar 24 and Zahid Wani 13. It was the carnage of Mir Sohail, and still thinking of that 6. He sent that one out of the ground, and I was thinking in my mind that how much distance the ball travelled. I surely might be thinking that definitely is going to be above 100 meters 6. That was a staggering, that was a towering 6. First ball of the fresh over, and he was trying to go downtown again, and in a hurry to chase that one down, and that's why they're just swinging on each and every ball. I was talking about that 6 of Mir Sohail. All of the matches which have been played so far in Janwara Cricket League, that was the biggest of the tournament. That was a monster of his bat. And I was still thinking that might have been more than 100 meters. 89 for 1. In the meantime, Altaf Hussain goes once again over the stumps. Outside off stump, cuts that one in the gap. And this has been the story, this has been the kind of a day. Wherever the batters are playing those shots, they're just finding those gaps at will. Each and every ball looks it's going to be out of the park. And this one again goes to the backward point boundary for 4. 93, so 18 runs away.
Just 18 runs away, and can you believe it? We are just in the power play. We have 93 on board. MCC Bandipora dictating terms. MCC Bandipora are on a roll. Absolute fire they have. They are with the bat. Next ball swinging, and he flicks it away. Goes to the onside. Goes down to the fence, and it has stopped near the boundary, I guess. And it's stopped near the boundary. And the batters take 2 more runs. 95 for 1, 16 to get. Totally a one-sided game for our beloved viewers who are watching it. And I could say thank you very much. They have supported us neck and neck. They're just watching us and been the driving force. A big shout out to each and everyone who've been watching and enjoying the game. Altaf goes once again. And he was trying to go for that no-look shot. He was trying to play it on the onside, even though he manages to find that gap on the onside. Still, they have the protection at the boundary ropes. Just a single. 96 for 1 after 5.4 overs. 2 more overs, 2 more deliveries to go in this final over of the power play. Altaf Hussain has conceded 25 in his 1.4 overs. So Rashid Khalik was expensive. And John Mir, who conceded 24 in the first, he too. So you could see 6 overs have been bowled and 95 runs have been scored. You can simply see that the bowlers have completely been off colour. They have leaked runs at will. Final ball of the power play. 16 runs to get. Mudassir Dar to face. So he's on 29 of 17. And it's obvious that Sohail Mir is going to take Super Striker of the match and Super Sixes of the match award as well. And this one is down the leg side. And how to rebowl this. Come back and rebowl this delivery again. It's a wide, 96 for 1. And it has been an absolute off day for Gundbrat 11. The bowlers, the batters didn't play their part. The bowlers looking off colour, even though the pressure is on them of defending a low score. It's a tough job. Again, as this kind of a batting lineup, and it was always going to be tough. Final ball. Altaf goes again, and no ball. And this one is over covers into the boundary for 4. Has been the problem as in the previous over of Altaf as well. He bowled at least 3 no balls. And again, no ball signal. Mudassir Dar stand and deliver. He stand a stall, drive was up and over covers for 4. Just 10 runs to get. Just 10 more runs to get now. Anzar Salim, welcome brother to the live stream. It's a free hit to Mudassir Dar. And no ball again. He goes for the scoop. And it's a full toss, goes on the bounce to the fielder at fine leg. Problem is for the bowler here. Again and again he is committing those mistakes, and you can see umpire signalling it a no ball. No ball again, so it's 102. Just 9 runs to get. And Mudassir Dar has got a free hit once again to face. Is he going to send this one out of the park? Oh, that's a Yorker, good Yorker that is. And only manages to jam it down to fine leg. We're done with over number 6. Power play has been completed. It's 102 for the loss of 1. Going at 17 runs per over in the power play. And they have completed the chase. They have made this game a one-sided encounter inside a power play. And they define as the kind of batting they have. They define as the kind of team, the kind of bunch they have got. So the fresh show begins, and it's a matter of time. They are just 9 runs away from a victory. अंजर सलीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ से स्कोर जो है 102, सिर्फ 9 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। और कुल मिलाकर जो है अभी पारी का 10वां ओवर, और इस मरतबा कॉट एंड बोल्ड किया गया है। आपको रीप्ले में दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो है ये विकेट गिरी।
आप जो है रीप्ले में देख सकते हैं। किस तरह से दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये विकेट गिरी रीप्ले के जरिए। रियल टाइम में आपको दिखाना चाहूंगा। कॉट एंड बोल्ड आउट हुए। देख थोड़ा कर दे, थोड़ा कर दे। था ठीक है। तो कुल मिलाकर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये विकेट गिरी। ये आप देख सकते हैं कॉट एंड बोल्ड हुए और इस तरह से ये विकेट गिरी। ये देख सकते हैं कॉट एंड बोल्ड हुए। तो अब आप सब व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूंगा कुल मिलाकर 3 विकेट गिर चुकी है और मजमूई स्कोर है 102। लेकिन यहाँ पर विकेट गिरना एमसीसी के लिए कोई जो है खतरनाक साबित नहीं हो सकता है, क्योंकि पहले ही 102 मजमूई स्कोर है और सिर्फ यहाँ से जो है 9 रन चाहिए। एजाज अहमद है बॉलिंग मार्क पर। फैसल डार आए हैं नए बल्लेबाज। फैसल सामना करेंगे एजाज अहमद की गेंद का। राउंड द विकेट एजाज अहमद के लिए बैक फुट पर गेंद को खेला वापस बॉलर की जानिब। अपने फॉलो थ्रू से थोड़ा आगे गए और गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। मीर ज़हूर हमारे साथ जुड़े, अनजर सलीम के साथ बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। एजाज अहमद ये 10वें ओवर की अगली गेंद के साथ, बल्कि ये 7वें ओवर का खेल जारी है और इस दौरान गेंद जो है आहिस्ता आहिस्ता बाउंड्री लाइन को छूते हुए 4 रन के लिए स्कोर बढ़ता हुआ 106 मजमूई स्कोर हो चुका है और यकतरफा मुकाबला साबित होता हुआ। टारगेट 111 रन का मिला था। अभी सिर्फ 9वें ओवर का खेल जारी है और 106 है मजमूई स्कोर। सिर्फ 1 स्ट्रोक दरकार मुकाबला जीतने के लिए। क्या कोई बड़ा छक्का? जी हाँ, यहाँ कोशिश जरूर की थी लेकिन अंदरूनी किनारा। इस दौरान 1 रन बना जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दूसरे रन के लिए गए हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। तो 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 108। सिर्फ 1 स्ट्रोक दरकार मुकाबला जीतने के लिए एमसीसी बांडीपोरा को और ये एक बड़ी कामयाबी होगी। बड़े मार्जिन के साथ 8 विकेटों के साथ ये मुकाबला जीतेंगे अगर इस गेंद पर कोई बड़ा स्ट्रोक आता है। एजाज अहमद फैसल के लिए और इस मरतबा गेंद को खेल दिया हवा में। शॉट 1 रन बना। दूसरे रन के लिए क्या जाएंगे? जी नहीं, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 109। ओवर की आखिरी गेंद फेंकेंगे एजाज अहमद और 2 रन दरकार मुकाबला जीतने के लिए। लोन मुदस्सिर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अनजर सलीम हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आखिरी गेंद इस ओवर की फेंकेंगे एजाज अहमद और रन दरकार 2 मुकाबला जीतने के लिए। मुदस्सिर डार सामना करेंगे उनकी गेंद का, जिन्होंने 20 गेंदों का सामना करते हुए 33 रन बनाए। तो मुदस्सिर डार सामना करेंगे, 2 रन दरकार। गेंद को खेला 6 रन के लिए और इस तरह से यह मुकाबला जीत लिया एमसीसी बांडीपोरा की टीम ने। He finishes it with a 6-2 needed and he smashes that one into the stands. It's a comprehensive win. It's a big victory for MCC Bandipora as they have won the first game of their leg of Janwara Cricket League quite comprehensively by 8 wickets. It has been an absolute dominance. The bowling has been terrific. The batters have done their job and they have scaled the target inside 10 overs. As I told you, the way they started the chase, it all began with Mir Sohail's blitz with the bat and he was going hammer and tonks, and then it was Mudassir Dar and Zahid Wani both finishing off in style. They have won the game by 8 wickets and have advanced into the next round, while as Gunbrat 11 they will have to pack their bags. It's over for them in Janwara Cricket League. So congratulations to the side of MCC Bandipora for